Hello, dear students of class 10 of India. Of India, what do I mean? Of India means all the places, here, there and everywhere. अब आप पूछेंगे कि मैं कौन हूँ जो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया को एड्रेस कर रही हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी इन अ लाइन कि मैं एक एटलीस्ट 50 ईयर्स ओल्ड टीचिंग एक्सपीरियंस रखने वाली एक लेडी हूँ. मैथ्स मैंने पढ़ाया खूब ज़्यादा in unmarried life, in married life, till retirement and even after retirement for 10 years about more. So इस तरह मेरा कुल एक्सपीरियंस है अबाउट 55 ईयर्स. तो सबसे पहले मैं अनमैरिड लाइफ में अमृतसर में मैंने पढ़ाया, हायर सेकेंडरी स्कूल था. आफ्टर दैट मैरिड लाइफ में मैंने शिमला में पढ़ाया एंड दैट वाज आल्सो हायर सेकेंडरी स्कूल. मैथ्स पढ़ाया और मैथ्स का ये NCERT की जो बुक थी वही मैंने पढ़ाई है. और हेल्प बुक के लिए RD शर्मा की बेस्ट बुक है, आई मस्ट से. जो स्टूडेंट्स अपना 100% अवार्ड लेना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है RD शर्मा की बुक में से भी. आई अप्रिशिएट दिस बुक के, ये पढ़नी चाहिए. रादर बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इट शुड बी ट्रीटेड एज इफ हमारे हाथों में ये गेम है जिसके साथ हम खेलते रहेंगे. गेम खेलने में कितना मज़ा आता है, उसी तरह इस बुक में से खूब ज़्यादा क्वेश्चंस ले लेके उनको सॉल्व करने में हमें बड़ा मज़ा आएगा और आना चाहिए. एंड यू नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आई एम श्योर कि आप मेरे बातों पर ध्यान देंगे और मैथ्स में अच्छे मार्क्स, अच्छा अवार्ड लेने की कोशिश करेंगे और बाद में कहेंगे कि सचमुच ही हमें ये लेसन्स जो हमें वीडियो में मिले हैं बहुत हेल्पफुल रहे. थैंक यू वेरी मच. अब मैंने पढ़ाते पढ़ाते अमृतसर में भी और शिमला में भी क्या पाया कि स्टूडेंट्स को कुछ चैप्टर बहुत मुश्किल लगते थे. फॉर एग्जांपल सिमिलैरिटी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ट्रिग्नोमेट्री एट्सेट्रा. तो मैं चाहती हूँ बच्चों कि आज एक मुश्किल चैप्टर सबसे पहले आपको पढ़ा दूँ क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं. आपने वैसे पढ़ लिया होगा, टीचर्स ने पढ़ा दिया, और नंबर 2 आपने कई बच्चों ने ट्यूशन्स भी ली होती हैं, पढ़ लिया. तो अगर मैं भी पढ़ा दूंगी तो आई एम श्योर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे इन मैथमेटिक्स. और मैं चाहती हूँ कि मैथमेटिक्स को ऐसे समझो बच्चों, अपने हाथ में बुक लेके इतने सम्स करो जैसे ये आपका टॉय है और हम खेल रहे हैं. मैथ्स के साथ खेलना चाहिए, खूब सम्स करने चाहिए. जैसे बच्चे खेल के खुश होते हैं ऐसे आप मैथ्स के क्वेश्चंस कर करके खुश हो तो आपका देखना अवार्ड बहुत बढ़िया होगा. 100% मार्क्स आई एम श्योर यू विल गेट. अब सबसे पहले मुश्किल चैप्टर एक लेती हूँ, दैट इज लेट अस टेक ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड है. ट्रिग्नोनो इट मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्री मीन्स अ मेजर ऑफ अ ट्रायंगल. और छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा, जूनियर क्लासेस में, मेरे को तो बताना नहीं चाहिए पर फिर भी लिंक्ड है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल से कनेक्शन रखती है. तो व्हाट इज अ ट्रायंगल देन? ट्रायंगल क्या होता है? अब फिगर ऑफ 3 साइड्स. तो ये देखिए, अ फिगर ऑफ 3 साइड्स, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, so it is a triangle. Is it a triangle? No, my dears, it is not a triangle. So the definition of a triangle is not कि it is a figure of 3 sides. We must say it is a closed figure of 3 sides. क्लोज्ड फिगर, 3 साइड्स का बंद हो जाना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड अ ट्रायंगल. दिस इज नॉट अ ट्रायंगल, इट इज अ ट्रायंगल. नाउ ट्रायंगल भी आपको पता है 3 तरह के होते हैं. नंबर 1 इज अ राइट ट्रायंगल, नंबर 2 इज एन एक्यूट ट्रायंगल एंड नंबर 3 इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. व्हाट इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट? Acute means less than 90 degrees. You know very well, I am sure. आप कहेंगे क्या मैडम को ये भी नहीं पता acute एंगल क्या होता है? हमें तो पता है. मैं बच्चों, मुझे पता है, आपको पता है, पर फिर भी आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर द सेम. एक्यूट एंगल वो होता है, एक्यूट ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं. और लेकिन एक बात और, तीनों एंगल्स की सम कितनी होती है ट्रायंगल में? तीनों एंगल्स की सम होती है 180 डिग्रीज. अच्छा, अब छोटी क्लासेस में आपने ये भी पढ़ा, जब 2 एंगल्स दिए हों तो तीसरा कैसे निकालोगे? अरे ये छोटी क्लासेस का काम था, आता है आपको. आई नो इट वेरी वेल. इवन देन आई मस्ट टेल यू, when the measure of 2 angles is given, then you can find the third angle. How?
From 180 degrees you will subtract the sum of the two angles given. जैसे एक आपकी मम्मी 40 रुपए आपको देती हैं, 3 बच्चे हैं, एक को देती हैं 10 रुपए, एक को देती हैं 5 रुपए, तो तीसरे को कितने दिए? आप कहोगे 10 जमा 5 15, तो 40 में से 15 गए 25, ठीक है। लेकिन लिखोगे कैसे? 40 10 जमा 5 माइनस 40 नहीं, 40 माइनस 40 माइनस ब्रैकेट शुरू 10 प्लस 5, तो 40 minus 15 will be 25, that will be the share of the third. Similarly, when two angles are given, you can of course find the third angle, measure of the third angle. Add the first and second and subtract the sum of the two from 180 degrees. Why from 180? Because the sum of the three angles of a triangle, you know, is 180 degrees. Yes, I know, you know it very well. So, ट्राइंगल में ट्राइंगल होता भी वो है जो तीनों साइड से बंद हो गया हो, और एक 3 तरह के हो गए एक्यूट एंगल, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल? मोर देन 90 डिग्रीज। और व्हाट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? A triangle in which one angle has a measure of 90 degrees, it is called a right triangle. लेकिन ट्राइंगल कोई भी हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट एंगल हो, तीनों एंगल्स की प्लस जो होती है दैट इज 180 डिग्रीज। आई नो इट, यू नो वेरी वेल। सो अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ये ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिगोनो प्लस मेट्री। ट्रिगोनो मीन्स अ ट्राइंगल and metry means measure of the three sides of a triangle and the angles of a triangle and three sides of the angles of a triangle is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री करवा दूंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मत जाओ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें 6 रेशियोज याद करनी होंगी। ओके माय डियर्स, कौन सी 6 रेशियो हैं? दो 6 रेशियोज आर रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो लेट मी टेक वन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। नो, let me say it is a triangle ABC, where AB is the base, BC is the side opposite to angle A. Angle A is an acute angle. So, the given side opposite to the given angle, the side BC is opposite side to angle A. Angle A is an acute angle, opposite side. It is called an opposite side. Now, AB is the baseline, base. And opposite side is called also perpendicular. Perpendicular. So, and this is the hypotenuse. So BC is the opposite side to angle A, AB is the baseline, and AC is the hypotenuse. So opposite side is called the perpendicular. So in brackets I must say it is small p, and it is the base, it is small b, and it is small h, hypotenuse. Now, which are the 6 ratios with respect to angle A? The side of the ratio of the sides of a triangle with respect to angle A or an acute angle are called the trigonometric ratios. So, number 1 is sine A, or let us say angle A is theta. Theta, what do you mean by theta? It is also a Greek letter. Theta means unknown angle. Sine A, or we may say it as sine theta. Sine theta is equal to perpendicular over hypotenuse, P over H, then cos. And sine in short form, abbreviated form, it is written as sine, S-I-N.
Sin A. Number 2 is I'm writing in the full form because you must know the spellings of sine. SINE, but in short form it is written as SIN, sine A. Number 2 is cosine, COSINE, cosine A. In short form it is cos A. Cos A is equal to cos theta. Cos A or cos theta, we must say cos theta because I am assuming angle A as theta. Cos theta is equal to B over H. P over H, then B over H, and then third ratio is called tan A, tangent A. TANGENT, tangent A, or in short form it is tan A. Tan A is equal to P over B. Then his fourth ratio is cot A. It is equal to B over H. P over B, P over B, it is B over P. Then fifth is sec K. Sec is the reciprocal of cos. It is B over H over B. P over B, P perpendicular over base, so it is B over P, tangent P over B, B over B, cot. Again I repeat, sin A is equal to P over or sin theta, theta is the unknown angle, sin theta is equal to P over H. Then in short form it is written as SIN, sin theta is equal to P over H. So base theta, cosine theta या cos theta is equal to base over hypotenuse. Base here is AB over AC, or it is B over H. Third ratio is tangent A. Tangent A is written as tan A. Tan A is equal to P over B. And cot A, it is equal to B over P. It is the reciprocal of tan. Cot is the reciprocal of tan. Now fifth ratio is sec A. Secant A or sec A. Its full name is secant. Secant A is equal to, it is the reciprocal of cos. Cos was B over H, it is H over B. Hypotenuse over base. Sec A, or its name is secant A. Now number 6 is cosec A. Cosec A, it is equal to H over P. H over P, P over H was sine. So cosec is the reciprocal of sine. Now
it can be written as cosec A is 1 over sin A. Sin A is equal to 1 over cosec A. Sin A was P over H and cosec A is H over P, reciprocal of that. So you must say sin A is the reciprocal of cosec A and cosec A is the reciprocal of sin A. Similarly, cos A is equal to B over H and sec A is equal to H over B. What does it mean? So second and fifth are connected. Second is the cosec A. Cos A is equal to B over H and sec A is equal to H over B. What does it mean? Cos A is the reciprocal of sec A. Cos A is the reciprocal of sec A and sec A is the reciprocal of cos A. Now third is tangent A. Tangent A is the reciprocal of cotangent A and cotangent A is the reciprocal of tangent A. Tangent A is P over B and cotangent is B over P. It is the reciprocal. So first is the reciprocal of sixth, second is the reciprocal of fifth and fifth is the reciprocal of second, sixth is the reciprocal of first and third is the reciprocal of fourth and fourth is the reciprocal of third. आप समझ ले? Now students please, I give you a line, if you remember it by heart तो आपको सारी रेशियोज की अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगी. वो लाइन क्या है? Some people have curly brown hair till painted black. Some people have. S is equal to, now write it like this, S is equal to P over H, C is equal to B over H, T is equal to P over B. What does it mean? Sine is equal to perpendicular over hypotenuse, cos is equal to base over hypotenuse and tan is equal to perpendicular over base. Now let us take the other three ratios also. Number 4 is sine, cos and tan are the first three ratios and number 4 is cot. Cot is reciprocal of tan. It will be B over P. Then is sec theta. Sec theta is equal to reciprocal of cos, H over B. And then is cosec. And cosec is reciprocal of sine. Reciprocal of sine, sine is P over H, it will be H over P. People have curly brown hair till painted black. S is sine. Sine is equal to P over H. C is equal to B over H. T is equal to P over B. अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपको ये पूरी रेशियोज याद हो जाएंगी. साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos is equal to base over hypotenuse and tan is equal to perpendicular over base. Now you know very well cot, already I told you cot is the reciprocal of tan. So tan is equal to P over B, so cot will be B over P naturally. Sec is the reciprocal of cos. Cos is B over H, so it will be H over B. And cosec is the reciprocal of sine. So sine is equal to P over H, it will be H over P. Followed? I think you have followed. Okay, then let me take one example. In a right triangle, if a right triangle is given, let us take a right triangle ABC. Where B is an acute angle. Now it is given that this side is 5, this side is 12 and this side is 13.
So find the 6 ratios. Number 1, sine B. Here acute angle is B and right angle is A. So opposite side to B is 5. Therefore sine B is equal to opposite side over hypotenuse. It means P over H. Therefore it will be 5 over 13. Number 2, cos B. It is base over hypotenuse. So base is 12 and hypotenuse is 13. Number 3, it is tan B. Tan is equal to P over B. P is 5 over base is 12. Number 4 is cot. Cot B, it is the reciprocal of tan. It will be B over P. So it will be 12 over 5. Then 5th is sec. Sec B. Sec is the reciprocal of cos B. So it will be H over B. It will be 13 over 12. Then is 6. It is cosec A. Cosec B. Cosec B is the reciprocal of sin B. It will be H over P. H over P. So how much is H? H is 13 over P. It is 5. 13 over 5. So these are the 6 ratios and I told you how to find the ratios. Suppose the 3 sides are given, the length of the 3 sides is given. These may be kilometers, decimeters, decameters, hectometers, kilometers, like that. Any unit it may be attached to these. So if the 3 sides are 5, 12 and 13, and suppose 2 sides are given 5 and 12 only, 13 is not given, then by Pythagoras theorem you can of course find it. So 5 square plus 12 square whole square root will be the third side hypotenuse. By Pythagoras theorem it will come equal to 13. So 5, 12 and 13, in case these are already given, so you can find the ratios in no time. Sin B, this is B angle acute and this is the right angle A. Sin B is equal to P over H. It is equal to 5 over 13. Cos B, again I am repeating. So sin B is equal to 5 over 13. Cos B is equal to 12 over 13 and tan B is equal to P over H. P over H will be 5 over 12. Cot B is the reciprocal 12 over 5. Sec B is the reciprocal of cos. Therefore it will be H over B, 13 over 12, and cosec is the reciprocal of sin. It will be 13 over 5. So like this we can solve the sum. In case 2 sides are given, so by Pythagoras theorem you can find the third side of course. वो क्या है? Base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. So hypotenuse will be equal to base square plus perpendicular square whole square root. And I know you can solve it very well. Okay. At page 178, this is given tan A is equal to 4 over 3. Find the other ratios of angle A. So let me take one triangle ABC. It's a right triangle and its name is ABC. Given a right triangle ABC in which it is given tan A is equal to 4 over 3. So if one ratio is given and we have to find all the other 5 ratios, how to find now? I think you can of course.
tan A is equal to 4 over 3. Now can you tell me what is tan A equal to? Tan A is equal to P over B. This is P and this is B. So by Pythagoras theorem, therefore P is equal to 4 units and B is equal to 3 units. Let us say by Pythagoras theorem we can find AC. AC is equal to, by Pythagoras theorem you can write there, AC is equal to AB square plus BC square whole square root. How much is AB? It is B square tan A. P is equal to 4. So P is equal to 4. AB is equal to base. AB is how much? AB is equal to 4 over 3. So 4 over 3 it is 4. And B is equal to 3. So AB square, how much is AB? 3 square. Plus how much is BC? BC is equal to 4. So 4 square. 3 square will be 9 and 4 square will be 16. So 9 plus 16 will be 25. Under root of 25 it is equal to 5 units. In case these are centimeters, so these will also be the centimeters. So let us write here, it is 5 units. So we have to find the remaining ratios. How will you find? Number 1, tan A is given. Number 1, sin A. Sin A is equal to P over H. How much is P? 4 over 5. Number 2 is cos A. Cos A is B over H. How much is B? 3. 3 and how much is H? 5. So it will be 3 over 5. Number 3 is tan A. Tan A is already given. Cot A. Cot A is equal to reciprocal of tan. So it will be 3 over 4. 3 over 4. 4 over 3 is tan. It is already given. Therefore cot will be 3 over 4. Then is sec A. Sec A is equal to P over H. Reciprocal of that is cosec. Lekin B over H, it will be H over B. H, how much is H? Hypotenuse is 5 and B is 3. So it will be 5 over 3. Then is cosec. Cosec A. It is the reciprocal of sine. Sine is P over H. It will be H over P. How much is H? H is 5. And how much is P? P is 4. 5 over 4. So these are the remaining ratios we have found out. Sin A is equal to 4 over 5. Cos A is equal to 3 over 5. Cot A is equal to 3 over 4. Sec A is equal to 5 over 3. Cosec A is equal to 5 over 4. So all these are the 5 answers for all the 5 remaining ratios. One is already given to you. ओके बच्चों, आज मैं एक एग्जांपल और दे रही हूँ, तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ जाएगी. और भी रिपीट करोगे, कुछ अपनी बुक में से भी पढ़ो और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल. सो मैं एक करवाती हूँ और अपनी बुक में से भी कर लेना. जितने भी फिर आपको नहीं समझ आएंगे तो कमेंट्स देना, आई विल सॉल्व फॉर यू. मैं समझा दूंगी आपको, नो वरी. ओके, तो वन मोर सम, लेट मी टेक in a triangle ABC, right angle dash B. So let me draw one right triangle. Right angle dash B. It means it is a right angle and there that point is B. So
this point is A and this point is C. Right angle at B, AB is equal to 4. It is given. AB is equal to 4. BC is equal to 3. Find all the 6 trigonometric ratios of A. एंगल A की 6 ratios हमें find करनी है. AB is equal to 4 and BC is equal to 3 and we are to find the 6 ratios, all the ratios. तो आप बताइए रेशियोज के लिए तो हमें ऑल द साइड्स लेंथ चाहिए होगी, लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स. तो एक साइड की लेंथ नहीं है एंड दैट इज AC, द हाइपोटेन्यूज. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू नो यू कैन राइट हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम. should me write also? I'll write it then. By Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to 4 square plus 3 square. So it is equal to 16 plus 9 is equal to 25. Therefore, AC is equal to square root of 25 and that will give us the result 5. So these are 5 units. So in case these are centimeters, let it be written here, write the unit centimeter. In case no unit is mentioned there, don't write the name of the unit, then AC is equal to 5. Now you have come to know the lengths of all the 3 sides and what we have to find all the 6. So number 1, sin A. Sin A is equal to P over H. Is equal to BC over AC. It will be 3 over 5. Then will be cos A. It will be base over hypotenuse. So how much is the base? 4. So it will be 4 over 5. Third is tan A. It is equal to P over B. How much is P? 3. So 3 over P over B, base is 4, 3 over 4. So sin A reciprocal, you know what it is? Cosec A. Cosec A is equal to reciprocal of sin. It will be 5 over 3. Now since you have found out the values of sin A, cos A, tan A, take the reciprocals, it will save your time. So cosec is the reciprocal of sin, that's why I am writing against it. Cosec A is equal to 5 over 3. Cos A is equal to 4 over 5, therefore sec A will be 5 over 4. Now tan A is equal to P over B, 3 over 4. So therefore cot A is equal to 4 over 3. So you are to write all these answers and mentioned here. As I am mention here answer. So I am going to end it here, the lesson for today. So I am sure you must have followed. In case you are unable to follow anything, any ratio, any relation between them and the angles, so you can mention it and write the comments there. I'll remove for your difficulties there. Okay, thank you. आप देते हैं, I'll test your work, I'll test your brain and then go further. Thank you.